Very good morning to everyone watching us today on Surfaces Reporter and Ply Reporters, Facebook and YouTube channels. My name is Madhurima Chaudhary and I am the Executive Editor of Surfaces Reporter magazine. Very glad to be back with yet another exciting topic and material in focus. This time we have the humble, often misunderstood ACP or Aluminium Composite panels. Today's session is segregated into two segments. First up, we will try to understand architects' perspective on the subject with our esteemed set of panelists. This segment will be moderated by Ms. Vartika Dwivedi, Editor-in-Chief Surfaces Reporter, followed by the second segment where we will discuss about industry and trade with our expert panel. This segment will be moderated by Mr. Pragat Dwivedi, Founder Editor, The Ply Reporter and Founder, India Interior Retailing. So, without taking too much time, it's a great pleasure for me to introduce all our amazing speakers and panelists today. First up, let me invite Architect Kshitij Limaya. Pleasure to invite on screen Architect Kshitij Limaya. Hello, everyone. Hi, Kshitij. Kshitij is the Executive Director of Sankalpan Mumbai, an Academy of Architecture alumnus with over 14 plus years of experience in diverse projects across India, UAE, and Southeast Asia. With strength of over 150 plus architects, designers, engineers, and project managers, and a strategic procurement team, Sankalpan today provides a wide array of services, which includes master planning, architecture, workplace design and strategy, interior design, project delivery, and build solutions. Welcome once again, Kshitij. Thank you so much. Next up, may I invite Architect C.S. Raghuram on screen, please. Welcome. Raghuram is a partner at Trilog Studio and principal architect at his family firm C.R. Narayana Rao Consultants, Chennai, a multidisciplinary architectural and engineering consultancy firm with an extensive portfolio in residential, commercial, industrial, and institutional buildings. Among his many awards is the Images Commercial Complex Award for South India and the Design Excellence and Sustainability Award from Dun Bradstreet for the Danfoss India project. Welcome, Architect Raghuram. Thank you very much. Thank you. Next up, I would like to welcome Architect Ajay Gupta. Can we have Ajay on screen? Hi, Ajay. Welcome. Good morning, Madhu. Good morning. So Ajay is the founder of Norwich Squirrel, a project advisory platform based out of Bangalore, an alumnus of Illinois Institute of Technology, USA, a member of American Institute of Architects and Council of Architecture, India. Before Norwich Squirrel, Ajay was partner at one of India's well-known integrated design practice company, KGD Architecture, as well as he has worked with several other top international architecture firms in the US. Apart from his professional role, Ajay has also served as guest faculty for Department of Hospital Administration at the prestigious All India Institute of Medical Science, New Delhi, and also serves as advisory board member at various platforms. A very warm welcome to you again, Ajay. Thank you for having me. Thanks. Now, let me also invite the other guests that we have today and panelists today. Mr. Atmabandhu Gupta from Ganesh Associates, Telangana. Good morning. Welcome. Hello, everyone. May I also invite on screen Mr. S.K. Bali, CEO of Hectafine Alusystems Private Limited, Delhi. Hi, Welcome. good morning. Welcome, Mr. Bali. Good morning, everybody. Thank you. Next, may I invite Mr. Harpreet Singh, Managing Director, True Wall Specialties Private Limited, Mumbai. A very good morning and welcome to you, Harpreet ji. Next, may I invite Mr. H.C. Jain
from Mahavir Corporation, Bangalore. Good morning, a very warm welcome to you. You are on mute. Good morning and hello everybody. Welcome, sir. Now we also have some special guests that we have and panelists from Europanel Products Limited. We have Mr. Rajesh Jain, Chairman and Managing Director. Mr. Divyam Shah, Whole-Time Director. Good morning all. Welcome. Good morning. Welcome Rajesh ji. Welcome Divyam. Hello, good morning. Good morning. And may I also welcome Mr. Rahul Gada, Chief Operating Officer, Europanel Products Limited. Good morning, everyone. A very warm welcome to all of you. Today, the sessions will be moderated by Vartika Dwivedi, Editor-in-Chief, Services Reporter, and Pragat Dwivedi, Founder, Editor, Ply Reporter, and Founder, India Interior Retailing. So to start, I would like to invite Mr. Pragat Dwivedi to share a few words. Hi, everyone. It's a pleasure to have you all here. मैं प्रगत द्विवेदी ज्यादातर हिंदी में कंफर्टेबल होता हूं बोलने में, although the other surfaces and architect segment will be in English and my segment will be in English. So I am Pragat and I'm going to host you all on the topic of how the facade and cladding industry is going to change, and it is still changing, and what has happened during COVID, post-COVID, past COVID, and Eurobond ने उसमें difference क्या add किया है. So today we have Eurobond team, today we have fabricators, and today we have top-notch architects with us. ज्ञान जितना बढ़े उतना धंधा बढ़ता है, ऐसा लोग कहते हैं, और ऐसा हमने अपने 20 साल के अनुभव में देखा है. आज एक से एक अनुभवी लोग एसीपी इंडस्ट्री, क्लैडिंग्स एंड फैब्रिकेशन के ऊपर अपनी अपनी बात क्वालिटी, ट्रेड, डिमांड के ऊपर रखेंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन सिर्फ फ्रूटफुल ही नहीं, ग्रोथ बाउंड भी होगा. I will hand over to Vartika to have the architects discussion in this show. The first part will be on architects' perspective, and the second part will be trade, distributors, dealers, and fabricators. So over to Vartika. Thank you, everyone. Thank you, Pragatji. And warm welcome to everyone again. So, tech team, I would like you to please bring all the architects on screen with me. Hello and welcome once more. I can see that Ajay has grabbed his coffee by the time, and Kshitij is ready to speak, and Raghu is also ready to share his insights. So I would like to start with architect C.S. Raghuram. Okay, I want to know from you, like we all know that SCP has been used, overused, abused, I would say, in the years that has been in the market so far. And after all the trials, tests that has been done on this product, it is still, it could create a place for itself in the facade and construction industry. What is your opinion? Yeah. Well, thank you so much for inviting me, and very happy to share my thoughts. I also see a lot of colleagues and friends, both from Eurobond as also from my architects. So it's looking forward to a very nice discussion. On the aspect of ACP itself, actually ACP has been around for so many years, actually, if you look at it. And today we are seeing an emergence of two sets of challenges. One of those are quite evident. We see the emergence of a lot of these new materials, which are stone veneers. We have HPL, we have fabrics that are coming on the facade. Glass itself has undergone a lot of changes and innovations. And you have clay tiles, you have porcelain, you name it. There is an emergence of materials that are being touted as alternatives to the cladding, external cladding and internal cladding.
But ACP has been around. There has been so innovations that we have seen, especially on fire resistivity that we have seen. We have seen innovations on material applications. We have seen in material surfaces and aesthetics. We have seen innovations. But the two biggest challenges that I see are, one, on the emergence of these alternate materials over the past couple of years. And the second, which is a very important aspect, is the energy efficiency aspect of buildings, and how ACP as a material can address that in some form. We do know that you always have that composite of you having your insulation and then your ACP cladding, but energy efficiency of materials is a big topic, and that is a challenge that I think we should look at, in addition to the challenge of other materials coming in. Awesome, wonderful. So the two challenges that you have shared, we'll be discussing on this in the throughout the session. So I would like to know from you, like when you are talking about other cladding materials and all, in comparison to other cladding products, how do you find ACP performing or positioning itself when it comes to affordability, ranges of designs, ease of installation, time, etc.? See, you know what? ACP is sometimes the go-to material when it comes to a challenge, and that I have to be absolutely honest about it. You of course have a lot of lot of variety, lot of diversity when you come across other materials, but ACP, in terms of its availability, in terms of its ease of installation, and a lot of it is also to do with the economy, or the price value that many customers get. Even till today, there's nothing to beat ACP. Okay, and we have to be quite honest about it. And I'm not saying it just because I'm on the show, but that's the reality of it. And to give you an illustration, I was at a project site just yesterday when we had to do a soffit cladding for a projection it was a multi-story building, and then at alternate floors we had this projection, and we had to do the soffit cladding, and the easiest solution was ACP. So in terms of its versatility, in terms of its price sensitivity, availability, ease of installation, even today ACP still has its place in the industry. Thank you so much for this awesome, crisp, and clear insight. Thank you. And now I would like to move to architect Kshitij Liman. And from you, I would like to know a different aspect of the product. Like we have often seen that ACP is everywhere, isn't it? With ACP, many people feel that all the buildings look so much alike, so monotonous, isn't it? What is your take? So the moment you actually sort of shared the topic, the first very thought that came to mind was that. So there is a saying, that too many people doing a thing, sort of it becomes the right thing. So that has sort of shaped the way, if I can say. To me as an architect, and I'm sure Raghuram and Ajay also would agree, that typically for an architect, basically facade or the skin of the building speaks of its nature, the nature of the building, its time and place in terms of the build. The context, you mean? The context of the building. So primarily, when it comes to sort of taking the design decisions with regards to the materiality of the facade, yes, I mean there are amazing options available. What has been more interesting, and I would say the rise of ACP as a go-to material, I can probably see about maybe 2 decades, largely because world over, especially in the Gulf or especially in the Southeast Asia, Singapore, Hong Kong, where some of the most amazing projects have been delivered using ACP. So many architects who have sort of started their practices in India, or Indian architects having traveled abroad, sort of could see that this is a wonder material which definitely could be used primarily, and also sort of
how should I say it? It sort of gives a look that's very contemporary or a modern is a general perception, and then it's sort of a safe bet to sort of do that. And predominantly why? Because it's very easy to maintain. It's easy to install. It looks amazingly finished. You can sort of use it in a non-limiting way in terms of the complex building forms and stuff like that. But to me, what I could see was not only the new buildings, but even the old buildings started getting wrapped around in this particular thing. Sometimes in a most amazing way, sometimes in a very, very mindless sort of a way. And to me, as an architect, it's very important that to say that ACP is a bad choice of a material is an absolutely flawed argument per se. Because as an architect, one of the most important decisions that we typically make is the materiality of the facade. So material itself should never be blamed, and ultimately one has to take a very judicious sort of an approach in terms of consideration of all the other factors, the sustainability, the materiality or the context or the environment or the fire resistance and stuff like that. So I would simply sum it up saying that we need to sort of defy the myopia of mere beauty and embrace an approach that sort of is beautiful yet functional, elegant yet maintenance or construction friendly, and contemporary yet sustainable. So that's where I would sort of leave it at that. Okay, so Kshitij, if I could sum up what you want to say is that it's not the material that makes anything look alike or something. It's the mind behind the material, the workmanship behind the material that makes it, right? Absolutely. Wonderful, wonderful, wonderful takeaway, Kshitij, from you. And now I have with me architect Ajay Gupta. Yes, Ajay, please unmute yourself. Yeah. Yeah. The third aspect of the discussion that I want to take it is how do you think, what do you think, how do you see this product ACP as a product for the future buildings? How do you see it? Do you see innovations? Do you see, the kind of the things that it has already seen and how much it has been used? It's enough and done, or do you see possibilities? Yes. I think I'll start with the negative connotation. It helps me speak better. It's basically, I think it's been your word. I'm going to use your word. I think ACP has been abused more than used, actually, especially in India. And we have a habit of mimicking the West anyhow. I think when the IT boom happened, we had to mimic the same buildings which existed in the US or Europe to get the MNCs to come to India. And we kind of lost the idea of architecture somewhere. We just started mimicking things, right? And ACP flooded the whole market. It became the Xerox of photocopy, so to say, right? It became the solid wall clad means ACP, right? We stopped conceiving a building with ACP. We started fixing buildings with ACP, so to say. I think that's the biggest challenge I have seen. I'm talking about the past. I'll talk about the future again. I think, and it's both faults. It's architect's fault, us as being a faulty in there, and our manufacturer who are pushing the product in that fashion. Right? So I think the future here is ACP is a great product. It was in my previous life in US, we were excited to have ACP 25 years ago because we used to use sheet metal for copings and sills and all, which was actually created oil canning. If you can understand oil canning, you should show the wave of the metal itself, and ACP got rid of that. So we were like, we clapped as architects, like, okay, we have a material which doesn't reflect the undulation of the metal, right? It's composite panel, 2 panels with a sandwich. Said that, we just started using it mindlessly here, right? So I think there's a lot of potential for us as architects to first perceive and conceive buildings with the ideology of ACP as a design element, not a infill element, right? Wherever there's glazing has to wrap in a soffit, glazing has to turn a corner, put ACP and close it a day. It has to have a spandrel panel, put ACP, close it a day. It's actually made a makeshift material where you can't see through, let's put ACP. And that's one issue there. Second is the way we apply ACP here right now. I think that will change in the future. The installation of ACP is very, very rudimentary application of ACPs right now. Majority of that in India, especially with a silicone joint in the middle of it, and it's just the actual external skin. ACP, I truly believe, should be applied as a rain screen, right? It should be open jointed or a dry joint, and actually can breathe the whole air gap between ACP and the principal blockwork wall, whatever could be where air circulates, and hence the thermal gain of the building could be reduced by 5 degrees. We are not using ACP for that at all. We are using like
oh, it's a very undulating block work. Let's just apply it and put a seal in the middle and call it a day. So I think future is bright. We all architects have to think of designing building with that ideology rather than using as a makeshift fixed material. Wherever we get stuck, we start using it rather than conceiving a building with ACP. I think that's the second. And the way we apply it also. I did a Sofitel hotel in Dubai. Actually, that ACP looks much, much better than majority of the ACPs in India, just because the application was kind of appropriate for the right reason and with a design sense of it rather than just saying, oh, I need to fill the gap, so let's do it. So I think there's a bright future for ACP, but I think we all have to fix ourselves. Architects have to fix ourselves, Indian architects especially, and the people who are pushing the product to us, our manufacturers also have to fix themselves. They have to place themselves differently. They're actually placing like this is the material you can go to for anything. Existing building, you have to wrap, make it a supermarket, you wrap it with ACP. You know, we're selling it like a Xerox. I'm telling you, we're selling it like a Xerox. I think it has premium quality, which we have not explored at all right now. That's my 2 cents to that. That helps. Wonderful, wonderful, wonderful. All three of you have touched 3 different aspects and, gave this session a great start. And, just to bring in what kind of innovations are happening in this product segment, I would like to call upon the young and dynamic director of Europanel Products Limited, Mr. Divyam Shah. Welcome, Divyam. He's the young director of Europanels. Hello, everybody. Divyam, since we have discussed about how SCP is being used, abused, overused, and the kind of the potential this product has, I would like to know from you just quick takeaway if you can give about what kind of innovations are happening in the product and design segment as you're seeing in your product. So in per se of colors and design segment, we are constantly developing new colors for rustic range, which is currently the new trend for raw metal looks, or wooden range and zinc range. Or per se, we are adding colors in marble and stone finishes. So that is a constant development which goes on at Eurobond. Every 6 months, we get new colors and ranges because that's what gives an aesthetic look. But that is about the colors and designs. However, the main product shift, which we are mainly focusing on, getting more products, is like we have started manufacturing honeycomb panels in India. We are the first Indian manufacturer to have a setup. So manufacturing honeycomb panels was itself a project, and we have successfully commissioned it. So we can offer such products. We have aluminium core composite panels and FR ACPs as well. So our entire focus now has been more towards fire safe facades, because I feel that is much due. It's not only the future, but it's a necessity. So we are adding our product portfolio with more fire safe products and fire safe ACPs. So it's a combination of development for towards sustainability with FR and more of colors and designs with always innovation, which is a constant thing. Wonderful, Divyam, for adding this important point about what's happening in the innovation segment, right? So I would like to end this important session with some suggestions, maybe messages from the architects. So architect C.S. Raghuram, to start with you, do you have any suggestion? Like Ajay has given some very, very important suggestions, and I think she has more. So architect C.S. Raghuram, what any suggestion or any wish that this product should have any other feature or anything that you'd like to share with the industry or the design fraternity? Yeah, so actually 2 perhaps. One is that sometimes when the installation is not done properly, people tend to blame the product, not the team that's actually done the installation. So if all of the manufacturers have a very robust monitoring or a training that we can have for people on the field for the actual correct application of ACP, I think that itself is going to be a significant way forward. The second aspect which I would like some maybe studies or research or innovation is on the sustainability aspect of it, or the energy efficiency aspect of it, either as a composite or
like how Ajay was talking about, as an open facade. Because we at Trilog Studio are focusing a lot on energy efficiency and sustainability. A lot of our buildings we are driving that as the primary motive behind the design. And so we are very keen to look at materials that have a significant contribution to the environment. And if some research can happen vis-a-vis ACP, I think that would be another good way forward. Wonderful. So sustainability is one thing, and the other is about strong monitoring, so that the entire process, the cycle of the entire thing is completed with quality consciousness. Awesome. Thank you so much. Now moving to Kshitij. Any suggestion, Kshitij? You have to unmute. So the suggestions is that, see, it's a great product. And we have to basically bring about a change in order to use it in a little more judicious manner. There are no limiting factors, as Mr. Divyam was saying, about the kind of colors, the textures, the kind of forms that it can take. I'm sure it will evolve over the time in terms of the better construction techniques, to make it look even more maintenance friendly, or even more constructability point of view as well. So my point of view is that we have to look at it in a little more judicious manner. So basically, what happens is that when one sees things in a new light, so approach to creation typically changes. So we have to make effort to reinvent ourselves, to be leaders in thought, to create the unborn, to challenge the constraints, mainly to unlearn so that we can learn again. And in this process, we have to defy conventions, stereotypes, the mundane character that it has brought into it, and re-evaluate what modern really means, So I think, I know a lot of words, but if you try to put it in context from a design standpoint, I think it will add a lot of value in terms of the tangible change that we wish to see coming into this particular thing. So that's my 2 cents. Thank you. Thank you so much. And now moving to Architect Ajay Gupta. Hi, Vartika. I think I'm going to expand on what Kshitij said before. People like us who got an opportunity to work in other countries or travel to other countries, and got excited about the product, start using it in India. So I think to build on that, the challenge is we are young. I mean, I'm talking about you and us, but architects, we are a young community, right? Young architects. They have to be told what this product can do. I think that the biggest challenge is it has to be told what the product can offer. And I'll be very critical. What happens with the product is you stick to your product. That's not good enough. You should tell me the solution of a wall. I think the whole idea is it should be a wall system which has your product, not only my product. So, but when you sell the wall system, which means it's a ACP / insulation or not, or airspace and waterproofing, block work, and when a window comes, how you flash it, when a sill comes, how you flash it, or a head comes, a coping comes. When you give me a full solution, I get excited. If you just sell your panels again and again, the architect is not convinced that it's going to actually work, or he's not even educated enough to understand how we'll apply it properly. I think any product manufacturer should sell the whole system. He may not be manufacturing the whole system, but should sell the whole system where his product is the principal skin of the material, right? I think that will help all of us architects get educated better, apply it better. I think it's all about application. We are not applying it right. I think it's basically we are not applying it right. I think that will help us all. Wonderful, Ajay. And I think as a media, we will definitely take this as a responsibility, our responsibility as well, to ensure that architects get educated in this. And as a community, we have to do it. Right, as an entire community, with the manufacturers, with the architects, with the in between the the other stakeholders in fabrication, installation, consultancy, and everybody together, and then only a holistic development in this segment is possible. So, with this takeaways from all the esteemed architects, I want to thank all of you and all who are watching us from all over India, and I've seen some from the other countries as well. Thank you so much for this time and the attention. And I would like to now give it to Ms. Madhu from Surfaces Reporter to take it forward, please. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you so much. Thank you so much, panelists. It was really, really insightful.
And I'm sure that this will bring about some positive changes for the product as well as for the entire fraternity. Thank you so much. Thank you so much, Bartika. Thank you, Madhu. Moving on, the next segment, I would like to share, before we do that, I would like to share a few words about our awareness partner for this knowledge session today, Europanel Products Limited. Europanel Products Limited manufactures aluminium composite panels, ACP, under its flagship brand Eurobond. Being among the top 5 brands for ACP in India with 19 years of goodwill, Eurobond is committed to offering an innovative range of facade panels to facilitate architectural wonders. With their manufacturing unit in Margao and head office in Mumbai, the company ensures a pan-India presence with a network of 9 depots, 80 distributors, and more than 5,000 dealers. Committed to quality and consistency, Eurobond also exports to 10 countries worldwide, including USA. Eurobond's next major milestone is their upcoming IPO on NSE Emerge. Constantly innovating when it comes to products and designs, Eurobond strives to always have and continue to be ahead of the curve. Let us see a little more detail about Eurobond Products Private Limited here. What do you see beyond the horizon? We see the future, where metallic dreams and shimmering aspirations shape a brave new world. Step into the future. Step into the realm of Eurobond. A bond that defines the future with the vision for growth and the singular objective to provide flawless, quality and innovative aluminium composite panels. A brand to reckon with since 2003. With a world-class production facility at Umargaon, Gujarat, Eurobond produces over 20,000 square meters of ACP daily with the capacity to serve its global clientele. Eurobond offers a range of products in a multitude of colors and finishes. These are put through a rigorous manufacturing process of the highest quality of international standards. We use alloy 3003, which ensures unique strength and increases lifespan due to high impact resistance and easy maintenance. There is no stone left unturned to maintain quality excellence. All the raw materials and finished goods are tested by advanced Japanese and German equipment in our labs to gauge testing parameters effectively and ensure consistency in output. Eurobond focuses on protection procedures with 3 layers PVDF coating to ensure durability and color consistency over the years. Eurobond places a lot of importance on safety, thus ensuring the usage of materials that can withstand fire and minimize impact. This includes A2 with a non-combustible mineral core filling used for fire safety and strength, preferred in high-rise constructions. ACCP with pure aluminium core, which is non-inflammable, lightweight and completely recyclable, being composed of eco-friendly material. And there is Class B with a 70% mineral core that ensures fire safety at an economical cost. All of this is backed by fire retardant tests from reputed laboratories. Innovation lies at the heart of constructions engineered with Eurobond products. We at Eurobond believe in producing novel and innovative products that contribute to the architectural revolution. Each of our employees share a similar value system based on diligence and dedication.
The future is here to bowl over your senses and help you accomplish towering ambitions. Stride forth, build everlasting bonds of beauty and brilliance with Eurobond. Bonds that last. With the next segment. Yeah. Okay. Proceeding with the next segment, I would like to quickly invite Pragat Dwivedi back on screen along with our other panelists to take the session forward. Thank you, Madhu, and thank you entire eminent panelist and audience. Welcome to today's trade perspective on ACP. आज के इस सेगमेंट में ट्रेड पर्सपेक्टिव एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल के ऊपर जिसमें हम चर्चा करेंगे मिस्टर बाली से एसके बाली जो सीईओ हैं हेक्टाफाइन एलू सिस्टम्स दिल्ली. देन वी विल बी टॉकिंग टू मिस्टर हरप्रीत सिंह ट्रू वॉल स्पेशलिटीज मुंबई, and then we also have Mr. Divyam Shah will be talking on behalf of Eurobond about quality matters, and second part will be discussed with the distributors of ACP, and third finally we'll be talking to Mr. Rajesh Shah who is managing director. इस पूरे सेगमेंट में पहला सवाल होगा क्वालिटी के ऊपर, और उस क्वालिटी के सवाल पे हम मिस्टर बाली के पास आएंगे, मिस्टर हरप्रीत के पास आएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या क्वालिटी में एसीपी में स्टैंडर्डाइजेशन है, क्या क्वालिटी में एसीपी के अंदर वो सप्लाई है. सो टेक टीम आई विल बी looking forward to interact with Mr. Bali and Mr. Harpreet if they are here on the screen. Yes, sir. Mr. Bali, are you there? Yes, I'm here. Yeah, Mr. Bali, how are you? Most welcome. मैं चाहूंगा कि Thank you, Mr. I'm good. हरप्रीत सिंह को भी स्क्रीन पे ले आए. और मिस्टर बाली, अभी प्रेजेंट मार्केट कैसा है एसीपी का कोविड के बाद, और जो क्वालिटी आ रही है वो क्वालिटी कैसी है? क्या क्वालिटी में वेरिएशन है? मतलब आप सभी तो यही बोलेंगे कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जितने प्लेयर हैं उसमें क्या सबकी क्वालिटी एक जैसी है? अगर है तो क्या करना चाहिए? आपका रोल ये है कि आप जो इनपुट दें वो बहुत ईमानदारी से दें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दें और बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट दें. एसीपी की क्वालिटी के ऊपर मिस्टर बाली आपका क्या कहना है अभी? If I talk about quality of ACP, I think, frankly speaking, except one or two products, whatever is available in the market, I'm totally not happy because of the price race which is going through the industry. What is happening, and people are like the manufacturers are not concentrating on the quality product. They are just trying to make products so that they can equalize the product with the. If we talk about ACP, which was started quite in India in I think 96, 97. The first project which was executed, I think I was also one of the part of that project basically. So the quality, people try to copy that product. They are not concentrating on the. Basically, if I talk about the specifications which are coming from the architects team or the consultants team, they are may not be particularly coming proper. Just they want to wrap up. Most of the architects, there are few architects, those who are very much concerned about the quality and all that. But what happens is if as a fabricator or as a contractor, if you talk about what happens, everybody starts making. But we have to be strict on the quality. The right product should be used. There are right product. There are quality products available in the market. We should use those products only, not run for each other. मिस्टर बाली, आपकी बात थोड़ी थोड़ी मिस्टर अजय गुप्ता से मिल रही है, जो आर्किटेक्ट अजय गुप्ता थे. व्हाट ही वाज टॉकिंग बेसिकली वाज कि फोटोकॉपी हो रहा है एप्लीकेशन में, yes, और yes, exactly. क्वालिटी के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन आना चाहिए. मिस्टर रघुराम जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एसीपी के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी की भी बात होनी चाहिए. तो पूरी तरह से सिर्फ प्राइस कटिंग के रेस में लगना क्वालिटी को नीचे ले जा रहा है, ऐसा कहना है मिस्टर बाली का. मिस्टर बाली, एक और सवाल है कि क्या डिफरेंस है, जो आप कह रहे थे कि मैं 2 ही 3 प्रोडक्ट अच्छे हैं बाकी नहीं अच्छे हैं, पर्टिकुलरली क्या है फर्क? कोटिंग का फर्क है, थिकनेस का फर्क है, क्या है पर्टिकुलरली? वो क्या बात है जिसको आप क्वालिटी कह रहे हैं? Yes, first of all, I will say that yes, coating quality. Second is the skin of the composite panel, and third
and the most important, I would say, is the alloy of the skin which is being used in aluminum composite panel. These are the three major things which needs to be addressed by any manufacturer, or they should consider these three major things. But everybody is copy paste, which is बाली जी, आपने अपनी बात कह दी है. हमारी इंडस्ट्री जो है एसीपी की, वो डेफिनेटली पिछले 20 सालों में इवॉल्व हुई है. और 20 सालों में जो शुरुआती प्लेयर थे जिन्होंने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाया, कुछ प्लेयर ही हैं जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में डील करते हैं. इसके बाद जो भी उनको फॉलो करते हैं या उसके बाद आए हैं, उनके इवोल्यूशन में प्राइस एक क्राइटेरिया बन गया. लेकिन जब तक आप फैब्रिकेटर लोग जबरदस्त रूप से थोड़े स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फैब्रिकेटर कम्युनिटी भी प्राइस रेस को हवा देती है. लेकिन इसके ऊपर मैं फिर से हरप्रीत सिंह के ऊपर आऊंगा. हरप्रीत सिंह जी से पूछूंगा. हरप्रीत सिंह जी, बाली साहब ना कह रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई तरीका है जिसमें कोटिंग, ग्रेड, इसको जाना जा सके एसीपी में? हेलो टू ऑल एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स. क्वालिटी के एस्पेक्ट, I would just like to highlight a few things that quality has evolved. बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया था जहां पर कॉपी पेस्ट हो रहा था, बट ऑफ लेट, आई थिंक सो 5-6 साल पहले से, there have been lot of innovations. Companies have become more aware. Companies have taken the responsibility to provide good products. As far as quality check करने की जो बात है, फिजिकली साइट के ऊपर सिर्फ 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जो हम फिजिकली चेक कर सकते हैं. वी कैन टेस्ट द थिकनेस ऑफ द पैनल्स, वेदर दे आर एज पर व्हाट इज स्पेसिफाइड और नो. लेकिन कोटिंग का जो एलॉय की बात कर रहे थे मिस्टर बाली, क्या उसकी भी थिकनेस चेक की जा सकती है साइट पर? जो एलॉय है, इसमें कुछ ही मैंने कहा कि देयर आर ओनली फ्यू टेस्ट दैट कैन बी डन एट साइट. दैट इज विजुअल इंस्पेक्शन. आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, आप जो स्किन की थिकनेस चेक कर सकते हैं, कुछ पील ऑफ का फिजिकल चेक कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टेस्ट्स आर कंडक्टेड इन लेबोरेटरीज. सो एट साइट देयर इज अ लिमिटेशन टू इंस्पेक्टिंग और चेकिंग द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ एसीपी other than visual inspection. That's all. Thank you, Mr. Harpreet. Mr. Harpreet, टू ऑल स्पेशलिटीज से हैं, मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग्स को काफी कैटर करते हैं. एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्या फैब्रिकेटर की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट की दरकार है? जैसा अभी सभी आर्किटेक्ट सहमत थे कि इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं होती. सवाल तो आप मतलब इस कम्युनिटी पे भी उठा दिया गया कि भाई उनको अपग्रेड होने की भी जरूरत है. क्या आपको नहीं लगता कि कंपनियों के साथ साथ फैब्रिकेशन कंपनीज को भी इवॉल्व होने की, अपग्रेड होने की जरूरत है? मिस्टर बाली एंड सॉरी मिस्टर सिंह, एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू मिस्टर बाली. बिल्कुल. The esteemed architect panelists have very rightly pointed out the proper specification of the product has to be absolutely right. The end use of the product has to be defined very properly. The products which are used, like interior and exterior products, they have to be defined very properly in the specifications. The installation systems have to be very neatly defined in the specifications. Now, what has happened is, in the past, in let us say B cities or C cities, there have been fabricators or there have been specifiers who have specified just 3 mm ordinary products or maybe even polyester coated products for exterior grade. अब इसमें बेचारे एसीपी की तो गलती नहीं है. एसीपी जिस प्रकार का आपने स्पेसिफाई किया वो लग गया, और अगर वो खराब हो गया तो क्या एसीपी खराब है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. ACP has to be rightly used. We have been using ACP for more than 20 years, and once the correct system is specified, the complete installation system is specified nicely, and work is done in a right manner with proper engineering, there is no question कि 20-25 years तक building को कुछ भी होगा, except for the fading and other aspects of PVDF which are on continuous improval stage now. Yes. Thank you, Mr. Harpreet. बाली जी, चलते चलते आपसे एक क्रिस्प सवाल है कि क्या फैब्रिकेटर कम्युनिटी को भी इवॉल्व होने की जरूरत है? क्वालिटी के, उनकी क्वालिटी में, उनके इंस्टॉलेशन क्वालिटी में क्या किया जा सकता है? Absolutely, because the thing is they have to
follow the right systems for putting aluminum composite panel in facade, that whatever like base framework and proper size of the panel and all that, everything has to be properly designed, and then it is to be applied. But what is happening again, I'm agreed with Mr. Harpreet, as he is saying that in if we go to the type 2 or type 3 type of towns, cities, and where there is no rule is being followed, even if I have seen that and 5 thick annealed glass panels are being put on the glass facade, and nobody takes care of that because nobody is taking इसमें सर गलती किसकी है, कंपनी की, sir? I think first of architect की. Sir, I think first of all I would blame it to the architect industry, because they did not take care of, because to be frank is not an issue, because they are getting, because I don't know, because what happens when we are our stage comes, when fabricators has to come to the place, it is a finishing stage, and whatever the finishing stage, I think so, but I don't know if I'm right or wrong. By that time, maybe the builder has drained out his entire money, and he also tries to compromise with his things so that he could manage the things with the whatever money he has left with. They are also put to be blamed, architects and the owners. Because if fabricator has to be asked that I want this material to put, then fabricator has to put that. धन्यवाद श्री बाली जी, आपने जिस स्पष्टता से अपनी बात रखी कि ऐसा नहीं कि फैब्रिकेटर ही जिम्मेदार है. Starting from the architect who specify the material, what thickness, yes, what quality, what level, what standardization he is seeking for. अगर वो सही स्पेसिफिकेशन नहीं है तो फैब्रिकेटर क्या करेगा? दूसरा, अगर ओनर खुद ही सस्ता लगाना चाहता है, पीई का मटेरियल लगाना चाहता है, तो दोष पूरी एसीपी इंडस्ट्री को क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज आने के लिए और इसमें चार चांद लगाने के लिए. चलते चलते आप फैब्रिकेटर कम्युनिटी को एक ही इनपुट मिला यहां से, वी ऑल नीड टू बी इंटेंटफुल. हम जो भी करें बेहतर करें, बेहतर मटेरियल लगाएं, जो लगाएं उसका पैसा बता दें. अगर उसकी इच्छा है कि सस्ता लगाना है तो उस पर छोड़ दें, और इसके लिए ब्लेम सिर्फ फैब्रिकेटर को ना दे. देयर हैज टू बी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप ऑफ एवरी स्टेक होल्डर. Thank you, Mr. Harpreet, and thank you, Mr. Bali, for today's input here. I would also like to ask one question to Divyam, because he looks after quality side of Eurobond. So, is Mr. Divyam on board? Mr. Divyam से एक सवाल है. Divyam जी, क्वालिटी के ऊपर लगभग सभी ने एक ही बात कही. आर्किटेक्ट कम्युनिटी ने कहा कि it need not to be xeroxed. Yes. Fabrication community ने कहा it has to be. There are very few people who are genuinely respecting and producing the quality. अब आप ये बताएं सर, यूरो बॉन्ड में क्वालिटी के नाम पर आप क्या करते हैं? सर जी, हमारा ब्रांड 19 इयर्स से है और हमारे कस्टमर्स भी रिपीटेड है. सो वो इटसेल्फ एक बता रहा है कि हम जो क्वालिटी बना रहे हैं वो मतलब हमारा एक ही मोटो कि हम जो बोलते हैं वही करेंगे और जो करते हैं हम बस वही बोलेंगे. सो हमारा जो पूरा प्रोसेस है कि क्वालिटी टेस्ट है हमारे, वी हैव अ स्टेट ऑफ आर्ट इन हाउस लेबोरेटरी. हमारे काफी इक्विपमेंट्स है और इनवर्ड आउटवर्ड सारे ही रॉ मटेरियल्स स्ट्रिंजेंट चेकिंग के थ्रू जाते हैं. और हम तीन चीज मेनली अलाइन करते हैं, मैन पावर, माइंडसेट और हमारे मशीन्स. ये तीनों एम्स हम अपने विजन से अलाइन कर रहे हैं कि जो हमें जो ट्रस्ट कर रहे हैं आर्किटेक्ट्स, फैब्रिकेटर्स, पूरे बिल्डिंग से, फसाड से, सो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट जाना चाहिए. मतलब हमें वो हम कमोडिटी ट्रीट नहीं करते. इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस प्रोडक्ट फॉर अस. सो उसके लिए जो पूरा प्रोसेस सिस्टम है, मशीनरीज है, लेबोरेटरी है, तो हमारे पास सर्टिफिकेशंस है फ्रॉम TUV. वी हैव बीन सर्टिफाइंग आवर प्रोसेसेस फ्रॉम एक्सोआ, UK लैबोरेटरीज. सो वी आर टेकिंग ACP नॉट टू अ कमोडिटी प्रोडक्ट. मतलब वो फसाड लेवल पे जा रहे हैं कि वो इंटरनेशनल फसाड मैच हो. प्रगति जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमने जो यूरामैक्स के साथ टाई अप किया है, विच इज अ UK कंपनी, और हम जो कलर्स ला रहे हैं, वी हैव अ मोनोपोली इन इंडिया फॉर दैट. सो उन्होंने जो सप्लाई किया है फरारी वर्ल्ड अबू धाबी में, सबने देखा होगा. सो दैट इज अ रेड कलर एंड इट हैज अ वारंटी ऑफ 40 years. सो दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ACP एंड कोटिंग्स, which is what architects were speaking, कि possibilities हमें देखनी है और हमें वो करनी है.
So we are ready to supply whatever is there on the products. तो यूरोमैक्स की जो क्वालिटी है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी है ना, आप ये कहते हैं, उसके साथ आपने टाई अप किया है, जेवी किया है. Yes, for India we can supply the Euramax coated products, and we have a monopoly for that. We have more than 35 products which offer Lumiflon PV coating. मतलब 20 साल की उसमें वारंटी है. तो ये जो है ये एक सही बात बताइए, लॉन्च किए हुए कितना टाइम हो गया वो प्रोडक्ट? 3 साल हो गया और कोविड भी आ गया. अच्छा, तो चलिए, इसका मतलब ये कहें कि कोविड आ गया तो अब उसको मार्केट करना शुरू कर रहे हैं. कैसा रिस्पॉन्स है उसका? मार्केट तो हो ही गया, और अभी जो है कोविड के बाद जब मार्केट खुला है तो अभी उसका जो रिस्पॉन्स है अभी वो बहुत अच्छा दिख रहा है. और वही देखते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सेगमेंट का भी बहुत अच्छा रिस्पेक्ट है और डिमांड है. मतलब 4 गुना ज्यादा प्राइस भी हो तो भी देयर इज अ डिमांड फॉर दैट. सो आर्किटेक्ट्स आर एमिंग फॉर दिस. इट्स नॉट अ कमोडिटी. पीपल वांट इट टू बी चेंज्ड. थैंक यू दिव्यम. विद शॉर्टेज ऑफ टाइम आई विल बी फिनिशिंग अप हियर. बहुत क्लियरली दिव्यम जी ने एक बात कही कि यूरो बॉन्ड 20 साल से है, और चूंकि वो जो कहता है वही करता है और कर रहा है, इसीलिए लोग लगा रहे हैं और इसीलिए ट्रस्टेड है. थैंक यू दिव्यम टुडे फॉर ज्वाइनिंग अस. कंक्लूसिवली 4,500 करोड़ तक की इंडस्ट्री प्लाई रिपोर्ट एस्टिमेट करता है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर उसे 3,3200 करोड़ पे ही समाप्त कर देता है. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एसीपी इंडस्ट्री का जो ताना बाना है, जिसमें 50 से ज्यादा प्लेयर हैं, 75 से ज्यादा लाइनें लग चुकी हैं, और ये 14-15% की स्पीड से ग्रो कर रहा है. चूंकि ये थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड भी हुआ है सेगमेंट, इसलिए बहुत सारे नंबर्स कई लोगों के रजिस्टर में शामिल नहीं होते. इसलिए हमारे आंकड़े और ऑर्गेनाइज व्यूअरशिप के आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं. तो 4-4,500 करोड़ की इंडस्ट्री पिछले 20 सालों में इतनी बड़ी हुई है. इसके अलावा फैब्रिकेशन वाली इंडस्ट्री है. फैब्रिकेशन वाली इंडस्ट्री भी लार्जली इस प्रोडक्ट से डिपेंडेंट है. अगर हम एसीपी का जेन्युइन प्राइस देखें 70-80 रुपीज के बीच में, तो फैब्रिकेशन इंडस्ट्री उसे इंस्टॉल करने के बाद लगभग 200 रुपए तक पहुंच जाती है, और इस पूरे वॉल्यूम को अगर जोड़ें तो 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाती है. Thank you Divyam for being us today, and I would like to have Mr. H.C. Jain, Mr. Atmabandhu Gupta and Mr. Rahul Gada. So moving forward on the same market supply, demand and future of the aluminium composite panel, Mr. H.C. Jain महावीर कॉर्पोरेशन बैंगलोर से बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं aluminium composite panel सेगमेंट के, और मैं चाहूंगा कि उनसे रूबरू हों. मिस्टर आत्मबंधु गुप्ता है तो उनको भी मैं चाहूंगा कि वो स्क्रीन पे आए, और मिस्टर राहुल गाडा जो सीईओ हैं यूरोबॉन्ड के, वो भी आए. टुडे फर्स्ट क्वेश्चन विल बी विद देम ऑन डिमांड. हाउ इज द डिमांड, हाउ इज द ग्रोथ आफ्टर कोविड? टेक टीम इज देयर. मिस्टर एचसी जैन, इफ यू कैन पैच अप इन लिंक. Shall I speak? Thank you, Pragat, for giving me an opportunity. Yeah, you're little bit. Yes, Mr. Jain, how are you? Can you hear me? I am fine. I am fine. मुझे ये बताइए जैन साहब की डिमांड कैसी है, ग्रोथ कैसा है कोविड के बाद? डिमांड कांस्टेंट है. पोस्ट कोविड इतना इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन इट इज इम्प्रूविंग. व्हाट आई फील, वी आर 80% प्री कोविड लेवल्स, between 80% pre-COVID levels, and demand is there absolutely. New demand is coming up, new applications are being made. Demand आएगी सब. अब आगे की डिमांड कैसा देख रहे हैं सर फ्यूचर का? जैसे कोविड के बाद अभी 80% हुआ, अगले 2 साल 3 साल में क्या देख रहे हैं एसीपी particularly? I expect a growth around 15 to 20% की ग्रोथ आएगी. इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स आ रहा है गवर्नमेंट के, और काफी रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं. डिमांड आएगी सब. आप बेंगलोर में हैं जैन साहब, बेंगलोर में एसीपी की बड़ी खपत है, कारण क्या है इसका? यहाँ का कल्चर में एक बिल्डिंग को मतलब क्लैडिंग करने का एक शौक है. इवन पब्लिक, आम पब्लिक में मेरी बिल्डिंग कुछ हटके दिखे. That one pattern is continuously being drawn from past 15-20 years. हर बिल्डिंग हटके निकलनी चाहिए, तो वो स्टार्टिंग से वो एक प्रैक्टिस आ गई है. मिस्टर जैन कहते हैं कि हर बिल्डिंग हट के दिखे, ऐसा कल्चर बेंगलोर में है. आप
सभी ऑडियंस ये समझे कि सबसे पहले इंटीरियर में ये आता है, ये परिकल्पना इंटीरियर में आती है कि घर के अंदर सबका अच्छा दिखे, अलग दिखे। इसीलिए वुड पैनल इंडस्ट्री या इंटीरियर सेक्टर की इंडस्ट्री ने अंदर बहुत सारे रंग, बहुत सारे लैमिनेट्स, बहुत सारी फ्लोरिंग, बहुत इनोवेशन देखा है। लेकिन सोचिए एक्सटीरियर में, क्लैडिंग में अभी कितना बड़ा बदलाव बाकी है। क्लैडिंग में श्री रघुराम ने एक बात कही अभी के डिस्कशन के पहले, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, इट इज अ गो ऑन मटेरियल, इट इज जस्ट रेडी टू गो मटेरियल। इससे बढ़िया, इतना बढ़िया अवेलेबिलिटी, इतनी इजी टू अप्लाई कोई मटेरियल नहीं है। यानी एसीपी की ग्रोथ जब आगे, यही फैशन जो बेंगलोर में है, अगर ये आगे बढ़ा और पूरे इंडिया में बढ़ा, मुझे लगता है कि 14% नहीं 17-18% की ग्रोथ जरूर आएगी। एसीपी कंपनीज को अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जैसा कि दिव्यम ने बताया कि देयर हैज टू बी ट्रस्ट ऑन द कोटिंग साइड, कलर साइड, लाइफ साइकिल ऑफ द एसीपी। इफ दैट सेगमेंट इज टच्ड, there is no limit. It is a free horse in coming future. This material will be a more fast growing segment. Thank you Mr. Jain. I have concluded your things in my way. मेरे ऑडियंस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मबंधु गुप्ता जी भी हैं, अगर हैं तो उन्हें प्लीज पैच करें। गणेश एसोसिएट्स तेलंगाना से मिस्टर आत्मबंधु गुप्ता is a fantastic daring entrepreneur. Welcome Mr. Gupta. How are you? Thank you. I am very good. How are you? I am good. How is the potential in top segment of ACP? Because ACP is fragmented. Yeah, look, obviously I agree with Jain sir. Like, there is a lot of potential and there's a lot of growth opportunities for us. As you know, Eurobond has recently launched the top segment, Euromax. So we have seen, in the past, there was not availability for in the top-notch niche segment. So Euromax has come up. Then recently we have done Honeycomb project, which is lightweight product. So there are, FR is also, fire retardant is also coming up. So instead of normal ACP, there is a lot of scope for us to grow in the higher segment. So where we have Euromax, then you got fire retard, then we also have the A2 panels and also Honeycomb. Then also we recently, in the last 1 year ago, Eurobond has also launched into the economical ACP, which is Archer. So there is, for us, its growth is the, there are a lot of opportunities. Not only that, as you mentioned, there are a lot of options for interiors. But if you really notice, there is a thing, we have seen growth of around 10-20% in interiors for ACP also. Like there are places in Andhra Pradesh where there is a lot of termite issues. So the whole area is itself, in all the interiors, it's only ACP is there. So I think presently Eurobond is doing a lot of innovations over there also in the interiors also. And I think I have noticed even in Hyderabad now people are trying to use ACP. In the past it was only commercial product. Now it's being used as residential villas or residential high-end projects where ACP is being used. So, opportunities are coming up every day for us in the new segments, which are the untapped markets for us. Tech team, please patch Mr. Jain and Mr. Rahul Gada together along with Mr. Atmabandhu Gupta. I have a few of a question. अगले 3 मिनट का ये सेशन है जिसमें मैं जल्दी सवाल पूछूंगा। Mr. Rahul Gada, CEO of Eurobond, I would like to have him. Welcome Mr. Rahul and again जैन साहब आपका स्वागत है। एक जल्दी से सवाल पूछूंगा, क्या ACP में प्राइस मैटर करता है? जैन साहब। नहीं, it doesn't matter. राहुल जी, क्या ACP में प्राइस मैटर करता है? क्या आपको अपना महंगा माल बेचने में दिक्कत आती है? सही से बताइएगा। थैंक यू प्रगत जी, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। देखिए प्राइस का डिफरेंस तो प्राइस का प्रॉब्लम तो सब जगह पे सब प्रोडक्ट में आता है, लेकिन हमारे पास काफी बड़ा रेंज है। मतलब प्राइस 0 टू सस्ते से लेके महंगा सब तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास है। और जिसको ब्रांड चाहिए, जिसको क्वालिटी चाहिए, वहाँ पे प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं है। और जो ब्रांड और जो जिसको क्वालिटी चाहिए उस चीज में ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। वहाँ पे जो टॉप 3 या टॉप 5 ब्रांड आती है वही वहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से जिसको क्वालिटी चाहिए वहाँ पे कोई प्राइस का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यूरोबॉन्ड के सीईओ मिस्टर राहुल कहते हैं कि प्राइस से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है।
आत्मबंधु जी कहते हैं तेलंगाना से कि दीमक बहुत ज्यादा खाने लगी है लकड़ियों को या और प्रोडक्ट को, इसलिए एसीपी की जरूरत और उपयोग दोनों बढ़ा है। जैन साहब कहते हैं कि 80% की रिकवरी हो गई है, 20% की बाकी है और आने वाले समय में हम 15-16% की ग्रोथ तो पक्का देखेंगे। इस पूरे समीकरण को एक साथ पैच करते हैं तो क्या समझ में आता है कि एसीपी बाहर से लगना शुरू हुआ, धीरे धीरे घरों तक पहुंच गया है और अब घर के अंदर जा रहा है, यानी इंटीरियर तक लगने की शुरुआत हो चुकी है। और यूरोबॉन्ड का स्मार्ट मूव जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि सबसे पहले 20 साल से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, फिर यूरोमैक्स नाम की कंपनी से टाई अप किया और स्ट्रेटेजिकली टॉप वाले मार्केट में घुस गई। और अब धीरे धीरे मैं सुन रहा हूं आत्मबंधु जी से कि भैया हम तो सस्ते वाला भी बना रहे हैं और उसमें आर्चर लेके आ रहे हैं, यानी बाजार के पूरे पिरामिड का 4000 करोड़ की इंडस्ट्री में शायद ये कंपनी कोई कोना छोड़ने की तैयारी में नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। बधाई देता हूं राहुल जी आपको। मिस्टर और एक बात, सस्ते में भी क्वालिटी देना यूरोबॉन्ड की खासियत है। आर्चर ये आप यूरोबॉन्ड सेल करते हैं इसलिए आप सिर्फ यूरोबॉन्ड की कह रहे हैं। No, it's not that. If you really look at the quality of the Archer is much better than whatever the competition in the market. So you can sell cheap, but you can't sell cheap quality. So are you seeing fast growth in Archer in competition? Exactly. Yes. Okay, then you're valid. Sir Jain साहब, you are the senior most one. आपका नाम है बेंगलोर में और पूरे साउथ मार्केट में। चलते चलते एक बात कहिए, यूरोबॉन्ड की कौन सी ऐसी खासियत है जिससे आप इतने साल से लगे हुए हैं, मतलब साथ जुड़े हुए हैं? I have been part of Eurobond journey. I have been part of Eurobond journey from past 19 years. I think mostly right from inception. The major thing what I found was it is the promise what was delivered, for quality what was delivered, commitment what was delivered, and consistency. Same चीज, जो चीज बताई गई वही मिली. That is the best part one. Second, now of late नया मैनेजमेंट, बहुत यंग एनर्जेटिक मैनेजमेंट वो भी आ गया है मार्केट में, तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, मटेरियल अवेलेबिलिटी बहुत इजीली स्मूथली आ जाता है. These are all factors which are building the brand Eurobond. थैंक यू मिस्टर जैन, थैंक यू मिस्टर आत्मबंधु। राहुल जी आपसे एक सवाल है चलते चलते, और मैं टेक टीम से आग्रह करूंगा कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेश शाह जी, उनको भी स्क्रीन पे साथ ही लाएं, राहुल गाडा जी को भी रखें, और हम जरा एक सवाल दोनों से पूछना चाहेंगे जब तक वो पैच होते हैं। थैंक यू मिस्टर जैन एंड मिस्टर आत्मबंधु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या वेलकम राजेश जी। यस सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई विल आस्क एक छोटा सा सवाल। आप पैनल इंडस्ट्री में बहुत समय से थे, वुड पैनल इंडस्ट्री में। करेक्ट। सडनली आप एसीपी में एंटर हुए, ऐसा क्या दुख था जिससे आप पैनल इंडस्ट्री से क्लैडिंग में आ गए? ऐसा क्या था सर? नहीं, सही बताऊं तो ऐसा कोई दुख नहीं था, लेकिन हमेशा ये रहता है कि कुछ ना कुछ अच्छा काम करे, कुछ ना कुछ ग्रो करे। पैनल इंडस्ट्री में हम लोग थे डिस्ट्रीब्यूशन में, और डिस्ट्रीब्यूशन में एक लिमिट तो रहती है, आपको पता है। हम कोई प्रोडक्ट तो बना नहीं रहे थे, लोगों के प्रोडक्ट बेच रहे थे, वो भी महाराष्ट्र में, और हम उससे संतुष्ट, वहां पे जितना ग्रोथ कर लिया हम उससे संतुष्ट तो थे, लेकिन हम ऐसे देखो तो संतुष्ट नहीं भी थे कि हमको आगे बढ़ना था। और उसी टाइम पे, जैसे आप जानते हो, यूरोबॉन्ड मतलब यूरो ग्रुप बॉम्बे बेस ही था, और उस टाइम पे यूरो ग्रुप को हम लोग जानते भी थे। तो एक बार ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आया, उन्होंने बात किया कि वो ग्रुप थोड़ा कुछ फाइनेंशियल क्रंच में था, उन्होंने बात किया कि भाई हम ये ब्रांड बेचना चाहते हैं। उसी टाइम पे मेरा ऐसे ही टूर था, दुबई जाना हुआ। वैसे देखे तो एसीपी क्या है मेरे को पता भी नहीं था। जब दुबई गए, दुबई में मैंने काफी सारी बिल्डिंग्स देखी, किसी को पूछा तो मेरे को पता लगा कि ये एसीपी लगा हुआ है। बिल्डिंग्स देख के बहुत अट्रैक्शन होता है कि नहीं, इतनी बढ़िया बिल्डिंग्स लगती है एसीपी को लग के। तो अभी इंडिया में तो इतना मार्केट हुआ भी नहीं है
और मेरे को 10 साल पुरानी ब्रांड मिल रही है जो एकदम पायोनियर ब्रांड है। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन दुबई से आने के बाद मैंने मेरे बेटे से मीटिंग किया, बोला ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको आगे पढ़ना है या तो फिर अपन नया बिजनेस शुरू करें। तो उसने बोला नहीं, आई एम रेडी। इंटरेस्टिंग सर, इंटरेस्टिंग जर्नी फ्रॉम पैनल इंडस्ट्री टू एसीपी इंडस्ट्री। अब आपसे और सवाल पूछने के पहले राहुल जी को, जिसके लिए रोक रखा है, राहुल जी, एसीपी सेगमेंट में क्या डिमांड, सप्लाई और पेमेंट बराबर है? अभी क्या सिनेरियो है पेमेंट का? देखिए प्रगत जी, आफ्टर कोविड मार्केट में डिमांड तो काफी है, ड्यू टू काफी जो होल्ड हुए प्रोजेक्ट्स काफी स्टार्ट हो चुके हैं वापस से फिर से। गवर्नमेंट ने भी काफी प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग की है, जैसे मेट्रोज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, बस स्टैंड्स हो गए, हाईवेज है, तो और काफी एप्लीकेशन भी एसीपी की काफी और एप्लीकेशन भी बढ़ चुकी है, तो डिमांड तो काफी है। और रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट आफ्टर कोविड सभी मतलब जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं सभी लोगों ने पेमेंट टर्म्स जो है काफी चेंज कर दिया है। और इस पर हमारा पॉलिसी जो हिसाब से है, हम लोग डायरेक्ट सेल में नहीं है, हमारे जो ज्यादा करके जो सेल है हमारा पूरा चैनल सेल है, तो पेमेंट की कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है इस वक्त। Thank you, Rahul ji. Thank you, Divyam ji. I will have two, three more questions left, and tech team, I will request put Mr. Rajesh Shah in the focus. And Rajesh ji, now how has been the journey in ACP so far? कैसा रहा आपका यूरो बॉन्ड में आना, और अब कैसा लग रहा है? रिग्रेट है या ठीक है? सही बोलूं तो पहले ये 1-2 साल समझने में लगे हमको भी, क्योंकि प्रोडक्ट भी नया था, पता भी नहीं था कुछ। लेकिन पहले से हमारे जैसे पैनल प्रोडक्ट्स में भी थे, तो हमारा ध्यान यही रहता था कि हम अच्छे प्रोडक्ट दें, क्वालिटी मटेरियल से काम करें, वो पहले से हमारी आदत रही थी। तो इसमें जब जैसे हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग हिच भी चाहिए, और मेरा सन दिव्यम है, उसने फैक्ट्री हैंडल किया, तो धीरे धीरे हमने सीखना शुरू किया कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, मार्केट क्या है, क्योंकि हमको आगे से विरासत अच्छी मिली थी, यूरोबॉन्ड का नाम पहले से अच्छा था, तो हमने वही कंटिन्यू किया। माल जो बोलना है, जो माल बोलते हैं वही माल देते हैं, और धीरे धीरे करके उससे भी बेटर करना शुरू किया, उससे बेटर प्रोडक्ट्स लाए, जो भी मार्केट में आ सकता है, मतलब जो भी इनोवेशन होता है वो हम इन हाउस बनाने का तुरंत इनिशिएटिव लेते हैं। तो करीब 5-6 साल में हम एक मशीन से शुरू किए थे, आज हमारे पास 4 मशीन से प्रोडक्शन लाइन, 4 प्रोडक्शन लाइन आज के दिन है हमारे पास। पर हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि कोटिंग लाइन हम लेके आएंगे, और खाली कोटिंग लाइन हम ऐसा कोटिंग लाइन लेके आएंगे, नॉर्मल कोटिंग भी करेंगे, और हमने जो यूरोमेक्स के साथ किया उससे हमने एक टेस्ट किया था कि भाई इंडिया के अंदर अच्छे और महंगे प्रोडक्ट चलते हैं कि नहीं चलते। ये टेस्ट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। आफ्टर कोविड हमको पता लगा कि भाई ये इतनी सारी डिमांड है, आर्किटेक्ट्स पे इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो इसमें जितना भी करे उतना कम है। यूरोमेक्स के पास कम से कम 400 डिजाइन है, हम तो रेडी स्टॉक में भी 30 डिजाइन ऑफर कर रहे हैं। तो हमारी बातचीत चालू है, कहीं ना कहीं हम कोटिंग के लिए भी कुछ बहुत बढ़िया टाई अप करेंगे, जिससे हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स दे सके। ठीक है राजेश जी, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर इनसाइट ऑफ द इंडस्ट्री। आप नया प्लेयर होने के बावजूद 1 लाइन से 4 लाइन, यानी you have gone 4 times in terms of capacity, or maybe 3 times. One more thing I would like to add here, Eurobond belongs to top segment category, which I call, Ply Reporter call it as a surfaces team, and Ply Reporter we do conduct a lot of surveys since 20 years. On top of line there are value added manufacturers. तो value added segment में कुछ ही लोग हैं, value added ACP में कुछ लोग हैं जिनकी संख्या 7, 8, 10 तक कही जा सकती है, लेकिन यूरोबॉन्ड स्पेसिफिकली एक ऐसा प्लेयर है जो काफी, उसका जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें वैल्यू एडेड कैटेगरी का बड़ा चंक है। इसलिए मैं बधाई दूंगा राजेश जी को कि महंगा प्रोडक्ट लाना, उसे लॉन्च करना और उसे चला देना डेफिनेटली तारीफ के काबिल है। आप, ये मैसेज सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही नहीं है,
उस ट्रेड के डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के लिए भी है, जिनको ये समझना होगा कि आने वाले समय में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की एक अपनी जगह होगी है, और उसे सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस से नहीं मेजर किया जा सकता। राजेश जी, व्हाट इज द क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन इमर्जिंग प्लेयर्स एंड ओल्ड ब्रांडेड प्लेयर्स? सर, क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी वही होती है कि भी आप जो कमिट करो कि भी मेरी क्वालिटी में ये है, वो होना चाहिए। अगर वो होता है तो धीरे धीरे आपकी ब्रांड बनती है। गेम कहाँ है? सब इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ पे हर डिफरेंट यूसेज के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट की जरूरत है। तो प्रोडक्ट तो सारे ही चलते हैं, कोई प्रोडक्ट हल्का है ऐसा नहीं है। आपको किस जगह यूज करना है उसके ऊपर से ये डिसाइड होता है। लेकिन तकलीफ कहाँ है? अगर मैन्युफैक्चरर ये बोलता है कि ये प्रोडक्ट एक्स है और वो एक्स देता नहीं है, तो कस्टमर चीट होता है। इसमें मैं ये भी बोलूंगा कि खाली इसमें मैन्युफैक्चरर नहीं है, इसमें काफी सारे फेटर्निटी है, आर्किटेक्ट्स है, फैब्रिकेटर्स है, बीच वाले हैं। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, खाली मैन्युफैक्चरर ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हम तो सारे A to Z सारे प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आगे वाले क्या पास कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, उसमें सब मिलके अगर काम करते हैं तो ये प्रोडक्ट का ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है और कस्टमर का विश्वास भी इस पे बहुत अच्छा हो सकता है। ये मेरा मानना है। हम इस फाइनल लैब के क्वेश्चन में राजेश जी से एक चीज और पूछना चाहेंगे। राजेश जी, आपकी कंपनी यूरोबॉन्ड पैनल्स लिमिटेड NSE इमर्ज पे लिस्ट होने जा रही है। Yeah. So what is your vision for Eurobond? What is your roadmap further? That is the last question which I'll be asking because we have crossed our limit. So Rajesh ji, please answer it. Yeah. Correct. ऐसा हम लोग NSE इमर्ज पे जा रहे हैं क्योंकि हम इसमें बहुत सारा ग्रोथ देख रहे हैं कि आगे हम 5 साल में यहाँ तक पहुंचे हैं और ये इंडस्ट्री में काफी सारा इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है। जो जितनी भी फैसिलिटी आप इन हाउस खड़ी करो उतनी आपको कैपिटल इंटेंसिव है इसमें, और वर्किंग कैपिटल भी बहुत लगता है। हम करीबन 4-5 साल में करंट ईयर हम लोग कम से कम 200 करोड़ तक पहुंचे। आगे हम देख रहे थे कि भी एक कंपनी आगे 3 से 4 साल में 25% ग्रोथ मिनिमम आएगा ऐसा लग रहा है, और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट के भी चांसेस बहुत है। हम लोग ऑलरेडी 10 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास कोई आदमी नहीं है बाहर जाने के लिए, ना कहीं पे हमने एग्जीबिशन किया है ना कुछ किया है। ये जो गुडविल हमारा बना हुआ है इतने सालों में, उससे काफी सारे कस्टमर हमको मिल रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि भी इसमें काफी सारा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो जितनी भी फैसिलिटी है हम इन हाउस खड़ी करना चाहते हैं जिससे हम काफी ग्रो कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी और यूरोबॉन्ड की पूरी टीम को। आज के इस सेशन में बहुत कुछ निकल के आया है। मैं बहुत कुछ कहना भी चाहता हूं जो मैंने समझा हुआ है, लेकिन समय कम है, इसलिए कंक्लूड करते हुए मैं एक चीज जरूर कहूंगा ऑडियंस से। कुछ भी सोचो बेहतर क्वालिटी के लिए सोचो, कुछ भी करो बेहतर इंटेंट से करो, और कुछ भी आगे बढ़ो तो टॉप ऑफ द लाइन में आगे बढ़ो। उसके लिए दिल निकाल के रख दो, मेहनत करो। और राजेश जी, आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय व्हेनेवर वी मीट। थैंक यू फॉर बीइंग टुडे अवेयरनेस पार्टनर। यूरोबॉन्ड को बधाई कि उन्होंने प्लाई रिपोर्टर के मिशन को, सरफेसेस के मिशन को, मटेरियल के नॉलेज बढ़ाने के मिशन को सहयोग करने के लिए आज हमारा साथ दिया। सभी ऑडियंस को आज ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। चलते चलते राजेश जी अगर कोई भी कुछ कहना चाहते हैं, आफ्टर दैट वी विल एंड द सेशन। मैं भी प्लाई रिपोर्टर और सरफेसेस की सारी टीम को बधाई देता हूं कि ये कोविड के टाइम पे इन्होंने ऐसा बढ़िया प्लेटफॉर्म खड़ा किया है कि सब घर पे बैठ के एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, एक दूसरे के विचार जान सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म हमने सोचा नहीं था कि ये बन सकता है, और आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हो, इंडस्ट्री को जोड़ते रहते हो, सबको जगाते रहते हो। तो आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। सभी को धन्यवाद, सभी ऑडियंस को धन्यवाद। प्लाई रिपोर्टर की तरफ से अभी भी बहुत सारे ACP पर चर्चाएं हैं। आने वाले महीनों में, दिनों में
वेबिनार्स में, अपने मैगजीन्स में हम बताते रहेंगे। एल्यूमिनियम कंपोजिट, एल्यूमिनियम कॉइल्स पे अभी एंटी डंपिंग लगी है, इंडस्ट्री में उसका विरोध है, आने वाले समय में क्या असर होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज बहुत समय अभाव होने के नाते ये सवाल रह गया, लेकिन फिर कभी जुड़ते हैं। सभी ऑडियंस को प्लाई रिपोर्टर और सर्फेसेस की तरफ से नमस्ते और प्रणाम। थैंक यू मिस्टर राजेश, एंड थैंक यू एंटायर पैनलिस्ट, eminent architects, fabricators and distributors for having us, joining us and speaking so openly. Thank you very much for being with us. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, everyone.